Hello students, this is ninth lecture on topic electrostatics. In today's lecture, let us obtain the expression for capacitance या capacity of parallel plate capacitor. ठीक है, डायग्राम में देखो, P1 and P2 are the conducting plates. Each plate has area A. Plates are separated by a distance d, and what is the region between the conducting plates? This region is filled by a medium, dielectric medium of permittivity epsilon and dielectric constant k. Right? Okay. Let plate P1 is connected to positive terminal of the battery and plate P2 is connected to negative terminal of the battery, so that plus Q, this charge is given to the plate P1. Because of that, equal amount of negative charge is induced from inside and equal amount of positive charge is induced from outside of plate P2. What is the positive induced charge on outer surface of plate P2 is neutralized or escaped to the earth by connecting outer surface to the earth. So this is how a parallel plate capacitor. Now from positive charge, from positive plate, electric lines of force start and terminate on negative plate. As plates are parallel, so electric lines of force are parallel and equispaced. Only the lines of force are a bit curved near the end, near the mouth of the plates. Because inside these lines of force experience the lateral pressure from both the sides, so they remain straight. But for the lines present near the end, lateral pressure is only from inside, not from outside. So because of shrinking tendency, वो थोड़ा सा bent रहेंगे. So lines of force parallel and equispaced represent uniform electric field, while the lines near the end represent non-uniform electric field. If area is considered large, then this non-uniform electric field can be ignored. Okay. अभी कोई भी एक पॉइंट लो inside the conducting plate. This point is present in electric field due to positive charge. Point is present in electric field due to negative induced charge. So at this point there are two electric intensities. One because of positive charge and the other because of negative charge. According to Gauss theorem and its application, what is the electric intensity near the conducting sheet? It is sigma upon 2 epsilon 0 k. ठीक है, तो because of positive, what is the electric intensity here is sigma upon 2 epsilon 0 k E plus, and because of negative induced charge कितना, again sigma upon 2 epsilon 0 k. So these are the magnitude of electric intensities at this point because of positive charge and because of negative induced charge. अभी डायरेक्शन टोटल फाइंड आउट करने के लिए, इफ आई पुट यूनिट पॉजिटिव चार्ज हियर तो ये रिपेल करेगा, तो बिकॉज ऑफ दैट इंटेंसिटी हियर इज डाउनवर्ड. अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो इंटेंसिटी इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ जो दोनों इंटेंसिटीज़ है दे आर इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आप ऐड कर सकते हो, ये टोटल हो गया. सो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k. व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी. व्हाट इज द चार्ज रिसाइडिंग ऑन द प्लेट? Q. It is residing on area A. So Q upon A is the replacement of sigma.
अभी यहाँ लाइंस कैसे पैरेलल एंड इक्विस्पेस है. This plate is at higher potential, this plate is at lower potential. So what is potential difference between them is V. V by D represents the electric intensity. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और एक मीनिंग है पोटेंशियल ग्रेडियंट. यू हैव V by D is what? E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है. दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वेट करो. सो वी गेट दिस V by D is equal to Q upon A epsilon 0 K. मैनेज करो. Q upon V equal to A epsilon 0 K by D. ये इधर A. According to definition, ratio of charge to potential difference is capacitance. तो ये हो गया C A epsilon 0 K by D. This is the capacitance of parallel plate कैपेसिटी. अगर दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में वैक्यूम होगा या एयर होगा तो K कैन बी रिप्लेस बाय 1. तो ये फॉर्मूला आ जाएगा. क्लियर? ओके. अभी इस फार्मूला से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं. एक, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर. Capacity of capacitor is directly proportional to dielectric constant, यानी nature of surrounding medium, and capacitance is inversely proportional to plate separation. ये तीनों पैरामीटर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम एंड प्रेजेंस ऑफ नियर बाय इन्फ्लुएंस. तो ये देखो, साइज एंड शेप, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम और कोई इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस है, वो कितना दूर प्रेजेंट है, डिस्टेंस डी पे. ये जितना क्लोज रहेगा उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा. दिस इज हाउ. देयर आर टू मोर एक्सप्रेशंस, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर एंड कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बट दे आर नॉट फॉर योर सिलेबस, सो यू जस्ट प्रिपेयर देयर फॉर्मूला. ये concentric spheres है. Positive charge is given to the outer surface of inner sphere. Negative charge is induced on the inner surface of outer sphere. Positive charge is induced on the outer surface of outer sphere. Outer surface earth को connect कर दो, it becomes a spherical capacitor. Let radius of inner